okay, we are like अब बता देना जब भी live हो, I am I good to go. I need to reach a place where like when we start recording from like YouTube and we don't have to say I think we are live. I don't, yeah. I think we don't have to. I missed the last word, but we're live. Yeah, मेरा ये था कि जब हम मेलन पे नहीं कर रहे और सिर्फ Zoom से भी कर रहे हैं, Yeah. तो the first sentence shouldn't be I think we are live. Yeah. But how are you, Vaibhav? What's up? I'm good, Vaani. How are you? I'm fine as well. Trying not to rant, so I You won't look rant. you look very tired. Yeah. Yeah, Yeah. I know too much is going on, and but like guys, जो भी chat में है, Uma is here. Please बता दीजिए अगर हमारा audio video सही है. आज I, बहुत ही imperfect like setting में वानी और मैं आज का stream yeah. कर रहे हैं, and But I'm on a sofa ready to have a go chat. for a nap the moment the stream I was gets. thinking more of like therapy session. Like I can Yeah, lie down on the sofa and then talk about all the trauma in my life. But nahi. yeah. January or Feb की trauma की बात करें. Not trauma, but like what's the opposite of trauma? Opposite of trauma A really is good toxic positivity. I'm really sorry. Yeah. So Okay. but like अगर कोई भी moderators में ये stream देख रहा है, so please title change कर दो. We are today not going to do just best of Feb. We are going to do best of Feb and Jan both. है ना? Yeah. तो yeah, so that's something we are doing. So Jan और Feb से चालू करेंगे. बीच में कुछ कुछ आपको interesting चीजें भी बतानी है. दिल्ली में some amazing things are like दिल्ली में हम कुछ interesting चीजें कर रहे हैं मार्च में. So हमें आपको उसके बारे में बताना है. Yeah. एंड मैंने मेरा मार्च खोल लिया है. मैं क्या बोल रहा मैंने मेरा फेब का नोशन खोल लिया है. Nice. I've also opened my Feb notion. It's very ठीक है. disappointing. सो मैं थोड़ा माहौल बना दूं वानी. Sure. Please. चलो गाइस काम पे लग जाओ. नोटबुक वगैरह लेके बैठ जाओ. मेरी भी थोड़ी हेल्थ खराब हो रही है अभी तो पार्डन लाइक द एवरी लाइक फंबल एंड एवरीथिंग. बट आई हैव सम ग्रेट रिकमेंडेशंस. मैं बीच में एक बार जस्ट मेरे को पानी के लिए बोलने दो 1 सेकेंड. Yeah, sure. Guys, until then, do like the stream. And do like the stream. There's also lower the quality of the stream. But yes, what's up, everybody? हेलो Okay. वानी, आई एम हियर. Welcome back. कितने लोग देख रहे हैं? 65 people are watching us. गाइस आपको जब पता चलेगा हम दोनों क्या क्या अभी गुजर रहे हैं लाइफ में, हमारे क्या चल रहा है, देन आप हमारे सारे फंबल माफ कर दोगे. Yeah. It's a miracle today's stream is happening. It was supposed to happen yesterday, but yeah, and like yesterday also was pretty much impossible. But आज कर रहे हैं क्योंकि हमें मिस नहीं करना था. And apologies, हमने जैन का भी मिस किया था, तो आज बेस्ट ऑफ जैन एंड फेब कंबाइंड है. this is always something is happening towards the end of the month. But okay. No problem, but we Let's never begin. give up on promises. Yes, let's begin. सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को. So मैं स्टार कर लेता हूँ चीजों को. मैं 5 स्टार्स दे देता हूँ. जो चीजें मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आती है उनको. फेब में बहुत सारी चीजें. फेब में मैंने एक रिव्यू पढ़ा था. आई हैड गिवन दिस अ शाउट आउट ऑन ट्विटर आल्सो. सो गाइस, आफ्टर सन जो मूवी है ना, उसके साथ मेरा बड़ा हेट रिलेशनशिप था. आफ्टर सन इज सपोजिडली वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ 2022. एंड जब वो मैंने मूवी देखी उसके बाद मैं ऐसा हो गया था क्या है इसमें, मतलब मेरे को तो हिट ही नहीं करी. मेरे को तो बिल्कुल हिट नहीं करी. मैंने देख ली बट आई वॉच्ड इट 2-3 weeks बैक और उसके बाद मतलब इट हैड सम लिंगरिंग इफेक्ट which never left me. It is about a father and a daughter relationship, and the memories of a daughter imagining her relationship with her father. वो एक बार एक ट्रिप पे जाते हैं जहाँ पे सिर्फ बाप बेटी होते हैं एंड लाइक उस ट्रिप पे क्या क्या होता है. मैंने देखी, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं कर पाया वो फिल्म एंड आई वाज लाइक ठीक है, बट कुछ ना मेरे साथ रहता था. Then like interestingly I stumbled upon this review by Rahul Desai on like the internet, and it changed everything I knew about the film. And guys, Rahul Desai का जो After Sun का review है, he had written there
कि जब उन्होंने जिस फेस्टिवल में फिल्म देखी थी उनकी लीस्ट फेवरेट फिल्म थी, बट उनको भी यही था कि कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में, ये जा नहीं रही मेरे दिमाग से. Then he started reading about it, why it is such a special film. So he educated himself about why After Sun is such a great film. Then he watched After Sun again. And imagine a critic saying कि मैं तब appreciate नहीं कर पाया था, तो मेरे को बाकी लोगों का पढ़ने दो, वो क्यों कह रहे हैं. Then he watched it again and it changed his, like पूरे परखच्चे उड़ गए उनके दिमाग के. And so basically आपको इसको एक कपल के जैसे देखना है. You first watch After Sun, then you go and read the review of Rahul Desai. I had tweeted also about it. I haven't rewatched the film yet, but memory loss and like जो आप manipulative memory या जो आप memory construct करते हो कि of the good old days, After Sun में देखने को मिलेगा. And do read Rahul Desai's review of it. उसको मैंने 5 स्टार दिए थे. ठीक है. So that this is number one. Vani, can I keep going एक बार? Yeah, please. Great. I have started reading this sci-fi trilogy of books. I think this will be my new 3-body problem. It's called the Childhood. No, sorry. Childhood Eve is different. Childhood Eve is a book by ABC. कौन है sci-fi के? जैसे बीस ब्रैडबरी, सी, you know ना, जिन्होंने and सी के वो है ना, जिन्होंने वो लिखी थी 2001 स्पेस ओडिसी. एंड एक कौन है, आर्थर क्लार्क. हाँ, आर्थर क्लार्क. आर्थर सी क्लार्क बी से है, ब्रैडबरी सी से कौन है गाइस, मेरे को याद नहीं आ रहा. सो चाइल्डहुड, सो उनकी किताब है चाइल्डहुड जीव. किसी ने कमेंट्स में बताया क्या, देखना. आर्थर सी क्लार्क की है अभी तक. चाइल्डहुड ईव इज अ बुक बाय, आई नहीं रही. There is ABC of like okay, Eva in Eve क्यों आ रही है, I don't know. Arthur Clarke ही होगा, yeah. So Arthur C. Clarke, but like okay, so there's this book that I started reading, Childhood Eve, but the book I wanted to talk about was Children of Time. Children of Time is a trilogy जिसकी first book का नाम है Children of Time. I'm reading it right now and I'm really liking it. And इसके बारे में हम आने वाले दिनों में और साल लाइक महीनों में बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं. And it has also won a lot of awards in past. In regard to like written material, there is this blog by Tim Ferriss that I discovered. It's called Fear Setting. Fear setting एक concept होता है कि जो भी आपके life के worst like nightmares हैं, आप उनको imagine कर लो और फिर उनको rate करो on a scale of 10. And then मतलब आपको mostly ये realize होगा कि आप जिस fear को 9 on 10 सोच रहे थे वो actually 4 on 5 है when you start visualizing it and imagining it. So fear setting is a practice that like very highly successful people do, and it can help you train your mind in regard to increasing the intensity of the fearful things that you face in life. And that is one. I have started reading this beautiful book by Eckhart Tolle. It's called A New Earth. A New Earth थोड़ी एक more complex version of Power of Now है. It is a book about collective consciousness. So collective consciousness का concept ये है कि मतलब इसमें एकार्ट टोल बताते हैं कि अब as human beings हम एक ऐसे पड़ाव पे आ गए हैं कि या तो हमारी पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी अब, या इवॉल्व करके ह्यूमैनिटी के बाद का कुछ चीज बन जाएगी. लाइक जैसे वो याद है मैंने आपको लेक्स फ्रीडमैन वाला वो दिखाया था, ग्राइम्स का एक पॉडकास्ट, जहाँ वो बोलती थी हम होमो सेपियंस है ही नहीं, अब हम होमो टेक्नोस हैं. So कि basically we have too much insight about कि how meditation, how like consciousness works. So अगर collectively if we do something about it, हम एक orbit ऊपर चले जाएंगे. So New Earth is about it. So I am just like briefly into the book, but like I'm really enjoying it. And I keep reading it. मतलब मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि I divide my day, जैसे स्कूल में periods होते हैं ना कि 8 पीरियड है तो आप ये पढ़ोगे. सो मैं मेरी किताबें ऐसे पढ़ता हूँ. I divide it into periods. Morning is something which is just for like the regeneration of my soul. तो उसमें मैं कुछ ऐसे meditation related या calming down related कुछ पढ़ लूंगा. फिर जब मेरा थोड़ा flow बन जाता है and then if I really need to like get into things, then मैं फिक्शन पढ़ लेता हूँ. एंड देन नॉन फिक्शन में वर्क आवर्स में पढ़ लेता हूँ. रात को अगेन यू नीड समथिंग लाइटर,
which is like in regard to कि शांत कर दो, मतलब not in the sense कि Yeah. okay, the meaning to be alive, like the idea which comes with being present and all those things. So मैं मतलब ऐसे divide करता हूँ, and I think like people can try that like a lot, कि क्योंकि हम स्कूल में 30-30 मिनट में हमारा पीरियड चेंज होता था, तो और हम बुक पे बदलते थे. सो समथिंग लाइक दैट मैं करने की कोशिश करता हूँ कि ओके अभी ये पढ़ लिया, अब ये भी पढ़ के देख लो, एंड दैट इज हाउ आई एम आल्सो एबल टू रीड मल्टीपल बुक्स एट अ टाइम. I don't know how many people are watching us. Okay, 114 people are 14. watching us. Guys, Guys, do like the stream. प्लीज लाइक कर दो. या लाइक आई सेड कि आप देख ही रहे हो कि हम कैसे अभी सर्कमस्टेंसेस में ये स्ट्रीम कर रहे हैं. ठीक है, बट लाइक या and a lot of godfathers are also in the chat. I see Anuj, I see Sumit Shetty, but if I miss someone, I'm really sorry. Yeah, so these are some of the written materials से related चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ. एक मेरा एक बहुत कूल चीज हुई थी वानी, लाइक आई एम रियली सॉरी, लाइक यू कैन टेक लीड व्हेनेवर यू वांट. माय No, it's okay. I'm listening to you. Okay. So I made this video on Kitabi Cabins about something very, very transcendental that I experienced, and like it is about me discovering a form of meditation after years of practicing it. Like मैं 2015-16 में कुछ ट्राई करता था, फिर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं मिला कि ये एक्चुअली एक चीज है, बट लाइक इन 2023 I rediscovered that technique. It is called Nada Yoga. And Nada Yoga में basically it's a meditation of visuals and sounds, and बेसिकली देयर इज अ साउंड ऑफ साइलेंस. आप उस पर फोकस करके मेडिटेट करते हो. आप अपने आईब्रोज के बीच में जो पार्ट होता है वहां पे फोकस करते हो, एंड देयर इज अ वाइट लाइट लाइक व्हिच फ्लैशेस एंड एवरीथिंग. और जो आपको वाइट लाइट दिखाई देती है वगैरह, वो लिटरली मैंने एक्सपीरियंस किया. इट्स नॉट लाइक कि हाँ भाई ऐसा कुछ तेरे को दिखाई देगा. वेरी वेरी लिटरल थिंग्स. इनफैक्ट लाइक द रीजन व्हाई आई स्टॉप्ड डूइंग इट वाज बिकॉज मेरे को कोई मिलता नहीं था जिसको मैं ये बता सकता था कि आई एम एक्सपीरियंसिंग दीज थिंग्स. बट नाउ आई एम लाइक properly scientifically getting into this. Nada Yoga के ऊपर एक किताब है, The Practice of Nada Yoga. I'm reading it, and yesterday I read a very interesting chapter in Nada Yoga. It was about कि कुछ लोग होते हैं जिनको sounds दिखाई देती है, and like how, and there is a term for these people, and it is very common among the musicians. It is called synesthesis या something like that. कोई कमेंट्स में बता सकता है कि क्या होंगे. I've So like heard of that पहले. Yeah. हाँ, सो एंड इट्स ऑल्सो स्किल दैट यू कैन डेवलप. सो अगर आप वो स्किल डेवलप कर लोगे तो आप ये चीजें कर सकते हो. तो नादा योगा में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप साउंड को एक बार विजुअलाइज करके देखो कि आप कैसे कर सकते हो. सो एंड दैट इज दीज आर द थिंग्स बिकॉज आई लाइक टू बिलीव आई हैव अ वेरी वेरी ऑडियो विजुअल माइंड. सो मैं ये मतलब ऐसे मजाक मजाक में करता रहता था. बट नाउ आई एम व्हेन आई एम लाइक हियरिंग कि ये बहुत पुरानी एक टेक्निक है जो ऐसे सालों पहले प्रैक्टिस की जा सकती थी टू फील प्रेजेंट, टू एनलाइटन योरसेल्फ. हाँ, तो मेरे को और मजा आ रहा है. यस, शुभम लाइक कमेंटेड राइट. लाइक वानी, हाउ डू आई प्रोनाउंस इट? सिनेस्थेसिया? Yeah, synesthesia. Yeah, so alchemist and Shubham, thanks for that. Falcon is saying I have this ability when I'm high. So ये बोला जाता है when you try LSD तो आपको lights सुनाई देती हैं और sounds दिखाई देती हैं. But like आप meditation के through भी एक level पे इसको skill set ला सकते हो. नादा योगा particularly जहाँ पे आप sound पे बहुत ज्यादा focus करते हो. Yeah. KTJ has said synesthesia. That's how you pronounce it. Synesthesia. Thank you so much, KTJ Horizon. And yeah, so नादा योगा के बारे में पढ़ रहा हूँ. I made a very very beautiful video जो मैंने एक गो में बनाया था. And every time I get into the flow, I like to make videos very quickly without a lot of edits. मैं टीम को भी बोल देता हूँ इसमें editing ज्यादा मत करना क्योंकि बहुत दिल से निकले. And so that is one of those videos जो मैंने बनाए हैं जो आपको देखना चाहिए किताबी कैबिन्स पे जाके. Virtual Cyborg is saying he loves us. We love you too, Virtual Cyborg. And watch Jaya Jaya Jaya. He after Vani's recommendation. Thanks for it, Daniel Hudson. Nice. Anandita is also in the chat, and Ishan Kapoor is saying Vaibhav, thanks for recommending the Breaking Bad show. Yeah, मतलब I can't take credit for recommending Breaking Bad. Like मेरे को मैं ये नहीं हो सकता. ठीक है. Yeah. So how many people are watching us right now? 123 people are watching us. I'm not sure about the likes because my likes are not loading as हाँ, it. likes मैं बोल रहा हूँ ना guys, आज बहुत ऐसे unreal circumstances में हम कर रहे हैं तो बहुत appreciate करेंगे अगर आप इसको like कर सकते हो ना.
True. सो देर इज मैं आजकल एम्बिएंट म्यूजिक में वापस बहुत ज्यादा घुस गया हूँ. अगर आप लोगों को एम्बिएंट म्यूजिक का शौक है, एक गूगल पे टर्म सर्च करना, 50 ग्रेटेस्ट एम्बिएंट एल्बम्स, और आगे एक वर्ड लिख दो. एक चीट कोड बता रहा हूँ मैं जीवन में बेस्ट म्यूजिक ढूंढने का. एक वर्ड लिख दो, पिचफॉर्क. गूगल सर्च के लिए जैसे होता है ना, कुछ गूगल सर्च के लास्ट में रेडिट लिख दिया, चलो अब तो चैट जीपीटी आ गया तो वो थोड़ा स्टेल हो गया. आपको म्यूजिक रिलेटेड कुछ भी ढूंढना है, आगे एक वर्ड लिख दो, पिचफॉर्क. एंड लाइक आपको 10x बेटर लाइक रिसोर्सेज मिलेंगे. सो 50 ग्रेटेस्ट एल्बम्स का एक आर्टिकल है पिचफॉर्क पे, वेयर दे हैव रैंक्ड द 50 ग्रेटेस्ट एम्बिएंट एल्बम्स ऑफ ऑल टाइम. सो वहां पे मैंने एक बंदा डिस्कवर किया. मैंने डिस्कवर वहां से नहीं किया, वो बंदा मैंने एक्सीडेंटली यूट्यूब पे डिस्कवर किया था, बट देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट हिम. हिज नेम इज विलियम बसिंस्की. मैं ये चैट में भी लिख देता हूँ, मेरी एक जगह चैट खुली हुई है. ये बंदा ना एम्बिएंट म्यूजिक बनाता है, और ये बहुत ही सुंदर एम्बिएंट म्यूजिक बनाता है. सो एंड आई एम रियली इनटू एम्बिएंट म्यूजिक, पर्टिकुलरली द स्टडी म्यूजिक, द लाइक कामिंग, एक जो व्हाइट नॉइज म्यूजिक होता है कि जब आप सो रहे हो, जब जग रहे हो, एक व्हाइट नॉइज जो चलती रहती है. मैं ऐसे जो आपके घर के पास से बुलेट जाती है उस व्हाइट नॉइज की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जस्ट लाइक द नॉर्मल व्हाइट नॉइज जो आपको Yeah. चाहिए. सो विलियम बसिंस्की इज वन पर्सन जो पिचफॉर्क की, उसकी एक दूसरी एल्बम उस टॉप 50 में फीचर हुई थी. सो बट लाइक इसका एक 2-3 घंटे का एक वीडियो है यूट्यूब पे. सो विलियम बसिंस्की समथिंग, इसको मैंने 5 स्टार दिए हुए हैं. एंड that is something. I've started playing a video game. Big shout out to Arpit for having shared his Steam library with me. This game is called Life is Strange, जहाँ पे आप एक लड़की बन के ये गेम खेलते हो. Life is Strange मेरे को पक्का पता है, किसी ने चैट में खेला होगा. मैंने अभी थोड़ा सा ही खेला है तो, और मैंने अभी बंद कर दिया, तो प्लीज मेरे को बताओ, मेरे को वापस खेलना चाहिए, बिकॉज आई हैव हर्ड इट हैज बीन लाइफ चेंजिंग फॉर पीपल. आप टाइम में पास्ट में वापस जा सकते हो लाइफ इज स्ट्रेंज में. सो इट्स अ वेरी कूल गेम कि आप कोई भी एक्शन करते हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, एंड यू कैन गो बैक टू इट, बट हर बार कॉन्सिक्वेंसेस अलग होते हैं, लाइक बिकॉज सम थिंग्स आर लाइक, ओ विनायक जस्ट रोड लाइफ इज स्ट्रेंज. यस, लाइफ इज स्ट्रेंज इज समथिंग आई हैव बीन प्लेइंग रिसेंटली. सो आई एम वेरी वेरी श्योर उसके बहुत बड़े फैन होंगे. ठीक है, इट्स वर्थ फिनिशिंग, आई से विनायक इज सेइंग. चलो, विनायक की मैं रिकमेंडेशन एनीवे बहुत सीरियसली लेता हूँ, and like I'll do so. And I learned a lot about Tamil cinema thanks to Hindal. So मैंने like finally जाके the movie जो मेरे को बहुत पहले देखने के लिए चाहिए थी, विक्रम, मैंने अब देखी. the movie starring विजय सेतुपति, कमल हसन and फहद फाजिल, and I fucking loved it. मैं पागल हो गया वानी वो देख के. ऐसा एक्शन मैंने इंडियन सिनेमा में बहुत कम देखा. इतना क्रिएटिवली, मैंने एक वर्ड बहुत यूज कर रहा हूँ मूवी क्लब में उसके लिए, एफर्टलेसली स्टाइलिश. एफर्टलेसली स्टाइलिश कि मतलब इतना स्टाइल, जैसे अब डॉन डॉन टू देखते हो आप शाहरुख की, उसमें उसको दिखाना पड़ रहा है मैं ऐसे कपड़े पहन रहा हूँ कि मैं स्टाइल मार रहा हूँ. विक्रम में किसी को कुछ दिखाना नहीं पड़ रहा, एंड इट इज सच अ स्टाइलिश मूवी. I'm going to watch this tonight. My only problem with Vikram is it is too gory, it is too violent, and I kept asking in the movie club, किसी को इसका आंसर पता है तो बताओ, how is it a UA movie? How is it not an adult film? Because there were so many things in the movie, and I was, ये adult movie कैसे नहीं है? And all kept saying, अरे नहीं नहीं, साउथ की movies में चलता है, they approve it. मैंने कहा, but bro, ये बहुत extreme violence है. So do let me know कि how did it pass the UA certificate, because I think it should be an adult film because it has very very gory stuff. इंडिया में तो मतलब बॉलीवुड में नहीं बनता, बॉलीवुड में इसका लाइक 10% भी हो जाए तो एडल्ट मूवी बना देते हैं. ठीक है. सो विक्रम इज ब्यूटिफुल. विक्रम से मेरे को लास्ट के 20 मिनट से बहुत ज्यादा इश्यूज है. आई डेंट लाइक, आई थिंक एंडिंग में उन्होंने थोड़ा सा लाइक सूर्या के अगर आप कैमियो को हटा दो, उसके अलावा जो एंडिंग वही ना, एक वो मेरे I फिल्म shouldn't का watch फ्रेंड this है. tonight. या यू शुड डेफिनेटली वॉच इट. इसमें एक मॉर्निंग सॉन्ग भी है विच इज वेरी वेरी क्रिएटिव. इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर है, ही इज आल्सो अमेजिंग. सो okay, so KTJ Singh, OTT is the reason, Kamal Hassan made it possible. And Vikram ka background music was also very very good. So yeah, special mention to Vikram's background music, definitely Anuj. I just fell in love with it. 150 people are watching us guys, jaldi like kar do. Vikram to abhi maine tip of the iceberg touch kiya hai, and now I think my next movie is going to be Kethi. I hope I am pronouncing it wrong. It's by the same director, again it's available on Hotstar. So मेरे को बड़ा मजा आ रहा है कि मेरे को बिना जज किए लोग कह रहे हैं कि मतलब मैं देख पा रहा हूँ, मैं मूवी क्लब में बता दूं, एंड आई थिंक कि इट्स जस्ट अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस.
So that is there. Vikram is something. Now I am also coming to the things जो अनिरुद्ध को एक शाउट आउट देना. अनिरुद्ध इज द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ विक्रम. वो बहुत ज्यादा यंग बंदा है एंड आई थिंक ही इज मल्टी टैलेंटेड एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू चेंज द लैंडस्केप ऑफ इंडियन म्यूजिक. द मॉर्निंग थीम जब वो आई थी अगेन दैट मेड मी थिंक ये एडल्ट मूवी क्यों नहीं है. बट आई केप्ट लुकिंग एट इट. और पता है मतलब देयर वाज दिस पार्ट जहाँ पे मैं विजुअली देख रहा हूँ और मेरे दिमाग में वो हो रहा था कि अगर मैं इसको डायरेक्ट कर रहा होता तो ये करता और मैं यहाँ पे ये लेके जाता. एंड मैं आंखें बंद करके कर रहा हूँ ये ना कर दे बिकॉज ये कर दिया तो बहुत कूल हो जाएगा. एंड दे डू द एग्जैक्ट सेम थिंग द वे दे यूज द मॉर्निंग थीम एंड आई एम लाइक होली शिट. अगेन लाइक इट्स ब्यूटिफुल. सो विक्रम आपको देखनी चाहिए. Now I'll get to the other great things that I watched. I kind of also want to talk about Fursat. Fursat is I rarely talk about things which I don't like, but like Fursat एक Apple ने official Apple के चैनल पे एक शॉर्ट फिल्म आई है जिसको विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है, which is completely shot on iPhone, and I couldn't get into it क्योंकि Samsung ने सेम चीज की. Samsung लेके आए what's the name of the Eternal Sunshine like writer Charlie Kaufman. तो वो चार्ली कॉफमैन को लेके आए to make another film. मतलब so Apple got Vishal Bhardwaj, Samsung got Charlie Kaufman. But interestingly, Hindol gave me this trivia. Samsung and like Charlie Kaufman had a falling apart. And फिर फाइनल जो मूवी चार्ली कॉफमैन ने बनाई वो सैमसंग के ऑफिशियल पेज पे गई नहीं, वो उन्होंने अपनी वेबसाइट वगैरह पे डाल दी. बट जो फुर्सत है वो ऑफिशियल पेज पे गई है. टिम कुक आल्सो शेयर्ड इट कि विशाल भारद्वाज की नई फिल्म आई है. आई डिडंट लाइक इट. आई जस्ट मेरे को बहुत कैरिकेचरिश लगी. आई विश्ड आई वुड हैव लव्ड इट मोर. बट हैविंग सेड दैट मैंने चार्ली कॉफमैन की फिल्म देखी. उस फिल्म का नाम है जैकल्स एंड फायरफ्लाइज. दैट इज वेरी नाइस. इट्स वेरी पोएटिक. मैं पहला थॉट ये था देखते ही वानी को बहुत पसंद आएगी. इट हैज वेरी वेरी गुड वॉइस ओवर पोएट्री राइटिंग इन इट. लाइक कि ओके जो डे टू डे मॉडर्न डेटिंग वर्ल्ड में मॉडर्न लैंडस्केप में एक इंसान जब ऐसे थॉट्स बता रहे हैं कि मेरे को ऐसा लग रहा है, सो वो कितने पोएटिक हो सकते हैं. सो दैट इज समथिंग या जो मेरे को वो लगा. मेरे को तो फुर्सत के विजुअल भी अच्छे नहीं लगे. आई एम रियली सॉरी द अल्केमिस्ट. मतलब आईफोन की कैपेबिलिटीज इससे बहुत ज्यादा खतरनाक है. तो मेरे को लगता है कि दे गॉट द लैंडस्केप्स राइट एंड ऑल, बट लाइक दिस इज वन फिल्म जहाँ मतलब मेरे को लगता है वो और मचा सकते थे. ठीक है. I also tried to watch Fursat actually, but I couldn't get past the first. Vaani, you have to watch Jackals and Fireflies. Like Fireflies and Jackal, जो भी नाम है, it's like very very solid. Okay. So yeah. So that is something. अभी हमें कितने लोग देख रहे हैं? 160 people are watching us, guys. जल्दी से like कर दो. अभी तो मतलब और भी बहुत सारी चीजें करनी है. I discovered a product. नहीं मैं पहले movies वाले पे कर लेता हूँ. 2 और shows की बात कर लेते हैं. So the शो इसके बारे में कभी बाद में एक लंबा अलग से वीडियो भी आएगा. मैंने अभी एक वीडियो बनाया था 20 ग्रेटेस्ट टीवी शोज ऑफ ऑल टाइम एंड मैंने उसमें बताया था देयर आर स्टिल सम शोज जो मैं अभी कंटिन्यूअसली देख रहा हूँ. सो जैसे अभी मेरा वायर कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा मैडमेन नहीं हुआ था. ओके गाइस, मैं मेरा मैडमेन के साथ आपको रिश्ता बताता हूँ. मैडमेन इज द शो दैट आई स्टार्टेड वाचिंग इन 2021 एंड आई एम स्टिल वाचिंग इट. मैडमेन में ना मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ कभी कभी कुछ एपिसोड देखता हूँ, फिर कुछ महीने तक नहीं देखता, फिर कुछ एपिसोड देखता हूँ, फिर कुछ महीने तक नहीं देखता. बट फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने एक मोमेंटम बनाया मैडमेन के साथ एंड मैंने सीजन 3 और 4 देखे मिड फेब से एंड ऑफ फेब तक एंड दे आर ब्रिलियंट. मैंने सीजन 3 और 4 निपटा दिए. अगर आपने मैडमेन चालू किया, बिकॉज एवरी डे इन द स्टूडियो आई केप्ट टेलिंग सौरभ विनायक मैडमेन देखो मैडमेन देखो मैडमेन देखो एंड दे बोथ केम टू मी एंड सेड हमने देखने की कोशिश की बट बहुत स्लो है. मैडमेन इज like very intentionally and consciously slow and uska season 1 is one of the weakest seasons. Weakest is a very big and a negative term, but in no way it is weak. It's just you have to slow down your metabolism to a very 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 great extent to be able to enjoy Mad Men. And by season 3 you'll be like holy shit, I'm way too invested in this. फिर वो story better करते जाते हैं. Mad Men के जो creator है मैथ्यू वाइना, he was a staff writer on The Sopranos. So you are in very very safe hands. You don't need to be worried. You in regard to actors also very safe hands. Everyone is like the basically the alpha and omega of like their territory. जिन्होंने डॉन ड्रेपर का रोल प्ले किया है, जॉन हैम, एलिजाबेथ मॉस, हर जना बहुत ज्यादा स्टार्ड है. सो मैडमेन आपको देखना है. मैं अभी सीजन 5 पे हूँ. So Mad Men is something which is there. I
also watched All That Breathes. मैंने वो बॉम्बे में देखी थी. All That Breathes is something that I really really liked. And All That Breathes अभी 8 तारीख को Oscars है. Let's all hope All That Breathes Oscar जीत जाए. If all goes well, we might be able to do an episode with Shaunak Sen. हमारी उनसे if I can reveal बात चल रही है, and like he is telling us जैसे टाइम मिलेगा वो हमारे साथ एक episode करेंगे. We also wished him the best of luck for Oscars today, because I very very firmly believe he will win the Oscar. मेरे को याद है जब वो उसके मतलब ऐसे पर्सनल विक्ट्री की वाली चीज हुई थी, बिकॉज आप बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ. आई वेंट टू माई पेरेंट्स, आई टोल्ड देम, आपको पता है कितनी बड़ी बात है कि अ गाय हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर एन ऑस्कर, एंड इट्स नॉट लाइक कोई ऐसी साइड कैटेगरी, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री में. लाइक कि इट्स नॉट लाइक रीजनल और लाइक इंटरनेशनल, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री में वो नॉमिनेट हुआ. सो ऑल दैट ब्रीड्स इज समथिंग जो मेरे को लगता है कि ऑस्कर जीत जाएगी, एंड दैट इज समथिंग आई वॉच. एक लेट्स आल्सो टॉक अबाउट द टॉक ऑफ द टाउन. बट यार मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा अभी, बट कर लेते हैं कोशिश. Let's also talk about Last of Us. Last of Us is everywhere. Last of Us has become, I think Last of Us के खत्म होती सक्सेशन का लास्ट सीजन आ रहा है, बट लास्ट ऑफ अस जिस लेवल से ग्रो कर रहा है, इट माइट बी एट पार विद सक्सेशन, एंड लास्ट ऑफ अस शायद बाय सीजन 2 माइट सरपास सक्सेशन आल्सो, जिस स्पीड से ये लोग मचा रहे हैं. वन ऑफ द थिंग्स आई हैव ऑलवेज हेटेड इन दिस वर्ल्ड इज ज़ॉम्बी जॉनर. मैं ज़ॉम्बी मूवीज नहीं देख पाता. मेरे को राजन डीके की गोवा गॉन भी इसलिए पसंद थी क्योंकि उस पर एक अलग टेक था थोड़ा ज़ॉम्बी में. उसका फर्स्ट हाफ बहुत पसंद था, बट zombies आर मेरे को बड़े इंटॉलरेबल लगते हैं क्योंकि उनका कोई कैरेक्टर नहीं होता है. कुछ कैरेक्टर नहीं है, नहीं तो विलन्स होते. सॉरी, इसकी No, same feelings. या इसकी रील बन सकती है क्या सच. सो बट सो बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि अगर हमें zombie मूवीज देखना नहीं पसंद है, zombie शोज देखना नहीं पसंद है, तो क्या हम तब भी लास्ट ऑफ अस देख सकते हैं? 1 सेकंड ना, sorry. And the answer is yes, you can totally watch The Last of Us. एक ह्यूमन कनेक्शन के बारे में एक ये स्टोरी है, एंड लाइक I one of those things is I don't know what happens in the game, and I am very strict about it in the clubs that I run कि गेम स्पॉयलर्स नहीं दे सकते और कुछ भी नहीं कर सकते. सो हमारा एक स्पॉयलर्स का ग्रुप है लास्ट ऑफ अस का, तो जिन लोगों ने गेम खेला है मैं उनको भी बोलता हूँ इट्स अ वेरी एथिकल थिंग टू डू. रेडिट पे भी आप जाओगे तो देयर आर प्रॉपर थ्रेड्स, नो गेम स्पॉयलर्स. तो मेरे को बड़ा मजा आ रहा है. आई डोंट नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, एंड आई हैव बीन एंजॉयिंग द स्टोरी अ लिटिल टू मच, एंड इट्स वेरी वेल डायरेक्टेड. क्रेग मजिन ने बनाई है, जिन्होंने तो चर्नोबिल बनाया था. और वानी को भी मैं पीछे पड़ा हूँ कि वानी द लास्ट ऑफ अस देखें. It's very beautiful, Vaani. It's again about like a relationship between a protector and a little kid, like and someone who's trying to protect that kid. And again, like basically इस शो ने ना पागल बनाया सबको बोल के zombie शो है, क्योंकि ये ऐसे रुलाता है ना आपको हर एपिसोड में, ऐसे रुलाता है. So yeah. Unsubscribe because of zombie movies opinion, but you should subscribe again because I'm saying Last of Us is the best thing that you'll ever watch. And it's a zombie. Yeah, so zombie like genre mein hi hai wo. Last few recommendations from Feb. कोडीबी के बारे में मैं एक रील बना ही चुका हूँ, शॉर्ट डेक के बारे में बना ही चुका हूँ, एंड मैं थोड़ा कॉफी नर्ड बन रहा हूँ धीरे धीरे. मेरे को एरोप्रेस के बारे में पता चला, अगेन थैंक्स टू अर्पित, ही हैज टॉट मी अबाउट लाइक एरोप्रेस, कि नॉर्मल अगर आप लाइक कॉफी मेकर लेते हो कि तो एरोप्रेस उससे कितनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी. एंड आई रिसेंटली लाइक वानी एंड आई रिसेंटली लाइक गिफ्टेड समवन लाइक सम कॉफी एंड लाइक दैट एरोप्रेस आल्सो. सो तो दैट इज समथिंग दैट लाइक जो मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है. आई रिसेंटली डिस्कवर्ड, मैंने इस चीज को भी 5 स्टार दिया है, कि नोशन पे आप टैब्स बना सकते हो आप, लेकिन आप गूगल क्रोम के जैसे खोल सकते हो. सो दैट हैज बीन समथिंग लाइक अ गेम चेंजर फॉर मी, एंड यस आई रियली रियली एंजॉयड इट. तो हाँ, अ स्मॉल ये मेरा था वानी अभी फेब का. ओवर टू यू. क्या आपके थॉट से कुछ बताना चाहते हैं? I have to follow up on that. It's very, I'm Yeah. very intimidated.
Um, but I loved your recommendations. I've noted quite a few things which I must watch. Also, like with the new place that I'm in, like my white noise had moved from bullet to aeroplanes because it's like यहाँ पे एरोप्लेन का इशू है yeah, it's कितना? like because it's closer to the sector where I was first living. So like every time a flight goes come lands, like it's dead. Every flight. Yeah, because it's on the way to the airport. No, Oh, it's the same. Like remember, like initially when we started yeah. Chalchitra Talks, it's the same thing. But I'm hoping Oh, it won't be as scary as sometimes it would get like there, where I would be sleeping and I used to feel like, oh, am I got dying? it. Is the world coming to an end? Got it. But I'll start like I feel very nervous because I have to follow your recommendations. But I'll start with January. So in the months of I'll just give disclaimer to everybody before I go in. I kind of did not get time to discover a lot more things. So I reviewed a lot of things I've already read because they were my comfort watches or comfort reads. And in the month of January, I'll start with this because it's probably the best discovery of 2023 for me. I discovered a quote, a poem actually by Hedy Praeb, which says, "As long as there is love, there will be grief." And I shared it in the book club also, and everyone loved it. And agar aap Kitabi Cabins pe streams dekhte ho har Thursday subah 7:30 baje, there also I shared it. It's about grief, the grief of time passing, of life moving or half finished, of empty spaces that were once brushing with the laughter and energy of people we loved, etc., etc. Basically, it says that grief is a giant neon sign protruding through everything, pointing everywhere, broadcasting loudly, love was here. And in the finer print, quietly, love still is. And I love this last line of this whole poem, which I did not read to you, because of how it connects it to the print and the finer print heading, subheading. Got it. Got it. And then I don't know if you shared it with me, but I discovered this article called My Best Techniques of Evaluating Character. Yes, And I I did. discovered, I did. yeah, and it's one of the best articles I've read so far, about how you can judge somebody's character based on how they treat people, etc., etc., Right. and how you shouldn't, if you're confused about a person, do not listen to them, just look at their actions and everything. Right. Right. So this is another thing that I read. And then of course I read Ghalib, A Thousand Verses, which I loved. But I also, because of that, discovered a lot more poets like Iqbal, etc. So unki poetry also I'd like to recommend to everybody. Um, and then this is my month of January, by the way. I discovered, music wise, I really loved this video of, now I don't even remember the exact music, but I discovered this band called Polyphia, and I am absolutely in love with their music. I don't know what genre they are, but if I were to recommend to you any song, start with Playing God, which is what just randomly popped up in my YouTube feed, and I fell in love with them. If you're somebody who loves rock, I would definitely recommend them to you. Apart from that, I discovered Hassan Rahim, and I'm very late to this party. He's very famous already, but I discovered him properly in the month of January. Nice. And then my Notion has a lot of articles on how to color hair without bleach, how long does the color stay, how to avoid getting your pillow covers red if you've colored your hair red, etc., etc. And uske alawa, I also saw the Queen's Gambit in January. Jiske baad se I've taken up chess, and I've been losing very badly. That's why I haven't been playing any game with Vaibhav. But it's very interesting because I discovered a lot of techniques, and I was like, "Oh, you can be a nerd and lose as well," which is something I'm absolutely cool with. Yeah. मैं कुछ ऐड करना चाह रहा था Yeah, लाइक yeah, जस्ट लाइक क्योंकि आपने वो कुछ अपनी जो पोएम्स के कुछ पार्ट बताए like I also want to share some of the quotes that I like made note sure. of Yeah. from this month. So like one of the quotes is, our worst fears lie in anticipation. Then one that I really like is, most people hate conflict. I recall one of the best pieces of advice I received as a founder: run as fast as you can towards your most uncomfortable problem. Then there's something I read somewhere:
most of you all are craving for a love nobody in this generation can give you. And That's very sad. yeah. Then the other one is, if you are not consciously building your habits, they are unconsciously building you. And then there is another one I remember sharing in the uh, book club. When you live inside the illusion that someone else's adoration determines your value, you are misaligned with nature. So this one really hits home for me because Ask Polly का जो Ask Polly कैसे ना बड़ा बहुत ही बेसिक सा नाम साउंड करता है, बट इनका जो ट्विटर हैंडल है इट्स हेदर हेरलेस्की समथिंग लाइक दैट. शी इज अ ग्रेट राइटर. त्रिवर्णा हरिहरन भी बहुत बार अपनी पोस्ट में आस्क पॉली की कुछ कुछ बस लाइंस डाल देती है. 5 या 6 मैंने उनकी पोस्ट देखी व्हिच इज जस्ट अबाउट आस्क पॉली. एंड आस्क पॉली का अगर आप ब्लॉग फॉलो करो गाइस, मतलब इसके आप डेप्थ समझ रहे हो. जैसे वानी पोइट्री आपको समझाती है, अगर इस सेंटेंस में ये जो 4 शब्द यूज किए ना, कि when you live inside the illusion that someone else's adoration determines your value, you are misaligned with nature. For me these 4 words are like what hits home for me. You are misaligned with nature. कि आपके कॉन्सेप्ट इतने लो है कि क्योंकि आपकी अलाइनमेंट हमेशा नेचर से होनी चाहिए. आप ये हो कि इस बंदे का जब या इस बंदे का वैलिडेशन मिलेगा तब मैं लाइफ में कुछ बनूंगी. बिकॉज आप लाइक नेचर जैसे वर्क करता है आप उसको समझ ही नहीं रहे. बिकॉज मैं भी जैसी किताबें वगैरह पढ़ता हूँ तो समझ आता है ना कि ऑल ऑफ इट इज रिलेटेड टू हाउ एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ वन थिंग, कि हम सारे Yeah. कनेक्टेड है यूनिवर्स से. सो द अलाइनमेंट टू नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हेन शी अटैक्ड यू बाय सेइंग आप अलाइंड ही नहीं हो नेचर से, आपके अभी बस कर रही है, तो आई एम लाइक दिस इज द स्मार्टेस्ट वे टू अटैक समवन, कि आप समझ ही नहीं पाओगे उसने कितनी गहरी बात बोल दी. सो या आई जस्ट लव दिस कि यू आर मिसअलाइंड विद नेचर अगर आपको किसी और की वैलिडेशन चाहिए. Nice. Yeah. I'll, So yeah, I'll kind of, I think you've told me about her, but I'm yet to discover her on please the do, Vani. You will have the only problem is time of उनके night. आधे blogs ना paid है. So मैंने Ah, उनके paid blogs इतने नहीं पढ़े हैं. She has like a proper like membership model, but like half of her stuff is paid. But like even if you just follow her on Twitter, ना you'll get like snippets of gold. So yeah, nice. so आपको करना चाहिए. पेट से याद आया, there is F1 TV and कल रेस है. Yeah, कल Watch it. अच्छा कल परसों रेस है. When it's the race weekend and it's Yeah, Bahrain, it'll yeah. discover who'll come Have you second. bought the subscription? Just bought it an hour ago, and it just Uh, shows on one screen. just one Just one screen. screen. You can have the app, you can have the access on six different devices, but the live stream will happen only on one stream. You are telling me you paid that much amount for one screen? 2499, yes. I For mean, one I don't screen. know. Like it's kind of my Formula One has become my pocket of stillness. If I feel sad, I go watch Formula One ke highlights or whatever. Very Where nice, eh? are you judging me, Dean John? No, no, I'm not judging you. I'm like, it's good to be passionate about things. Yeah. It's just, yeah. I'm not very proud of this. No, you But can be proud of this. Have you seen the latest Drive to Survive season? yeah. Finished the day it came out. कैसा लगा आपको? I mean, I take DTS with a pinch of salt now because हाँ. the more you No, but get, did you enjoy it? Like मेरे को मतलब yeah. आप ये भूल जाओ कि उसका I realized how bad Charles Leclerc का इस बार कटा था. Like, I mean, I knew उसका no, कटा है, but I realized. I'm But talking in a very general way कि अगर किसी को F1 के बारे में कुछ नहीं पता है और why like then start with DTS? That's kind of, yeah. my question is very specific to this season and how enjoyable it is. Not talking about the precise कि किसके साथ क्या हुआ था, कि is it enjoyable? For me, it was more of a revision, so I don't know if it's enjoyable. But I kind of हाँ. like, for me, it was like, अच्छा ये पता है, so I can like skip it a little. मैंने वो किया था इस बार, so I did So not so really. you skipped ऐसे बीच में से? हाँ, because I was like, okay, I know this part. And the more you get into Ah. Formula One, you kind of start understanding where the scripting is coming, where Netflix is just kind of spicing things up. Like they'll put the audio of some other race on this one, and that's very shitty. And then you kind of start going a little like, okay, I can take this with a pinch of salt. But otherwise, it's enjoyable, of course, if you like Formula One. But I kind of skipped a little because I don't know. My obsession with Formula One has started scaring me now. Because genuinely, when the kind of as like the weekend started getting closer, I was so excited. I haven't been so happy since November. Are you
You should smile a little so that I can a little. No, this is nice. This is nice. I just wished कि आप वो मतलब multiple screens मिलती for the subscription. Yeah, because I Yeah. really like it's just so you can get it. I don't even get you can get it on 6 devices, but you can access only one screen at like क्या if पता it's इसका कुछ live. solution हो, but yeah, Yeah, I I think was hoping. अभी I think flow नहीं break करते. A lot of Anyway, people are still yes. here for the recommendations. So Um, yeah, yeah. so I also I haven't bought this yet, but there is this make your own pencil DIY kit, Oh but it's available only yes. in Canada. So I कनाडा से anybody, चैट में कौन देख रहा है guys? पहले तो ये बताओ कनाडा से अभी कौन कौन स्ट्रीम देख रहा है? वानी को आपसे एक ऑर्डर मंगाना है. yeah, I was also going to recommend it to people, but I'll just share the link in the chat if anybody can get it ordered for themselves or for me also. Oh, हाँ. I'm logged in through Chalchitra Talks, but okay, that's there. And it's really nice. They give you their own leads, their own pencils, their own wood, eraser, etc. So you can have a customized pencil that you made for yourself, which is हाँ. something I really liked. And then for some reason, I rediscovered the article which you had recommended everybody last year. It's by The Onion. Please like me, Oh Ellen Musk. lovely. Oh, I rediscovered it. it's beautifully written. Yeah. Yeah. And I also started watching a lot of Korean drama in the month of January. And I do not know why, but I have a small complaint. Sometimes, if you look at the plot, dur se, it's like really nice, but they have to put in romance everywhere. Like this, when you talk about the story, it's very genuine, it's very heartfelt, and then somehow or the other way, either there will be romance and there will be beauty in some or the other way. So I have certain complaint, but then it's always enjoyable. I also want to recommend this channel, YouTube channel that I discovered, which is State of Mind. Last I checked, they had less than 20K followers, subscribers, but I really, really liked their content. And I discovered him, the guy, through this video he had made, um, how I developed a photographic memory Wow. because I was looking to like sharpen my memory. Wow. And then I discovered this video, but amazing research about State the of mind. simplest topics. ये green renaissance type कुछ है क्या? No. There's this guy who will take up a topic, he'll research, and he'll present the synopsis to you. But I really think some of his videos are very underrated. Like, and they are very well shot, and the content is also amazing. वापस please भेजना ना अगर आप भेज सकते हो तो I'll watch it. I'll share the video. I've shared the video with you in the group, but I'll share it. I'll share the channel this time properly, so that maybe if there is any video that you want to watch. Amazing. And there's this video that I saw, which I want to recommend to everybody. I don't know the channel, but it's called One Day in the Coldest Village on Earth. It's by Yakutia. The name of the village is Yakutia. I don't know how to pronounce it. It actually talks about how life goes on in the coldest village on Earth, as the name suggests. It follows a family actually. How the 6-year-old goes to school, how many layers he has to wear, and how the father makes money, where their food comes from. And then in a bittersweet way, it talks about also those people who've moved to better places, which are less colder, for better life, for more money, because this one, there are only limited options here. And it's a really cute, heartfelt video. Not a cute, heartfelt video makes it very weird, but it's a genuinely nice video about this family of 3. They're actually a family of 5. 2 people are not staying in the village. There are 3 people left, a young kid, the parents, and how they make through every day. It's not like they're poor and they're struggling, but it's just how everything is so wholesome and yet it's such a major struggle for them. Absolutely beautiful. मैं एक सेकंड लेना चाहूंगा शुभांक व्यास in the chat. Like I know the guy very well and he was a good fella for a very long time. He just commented he became a gladiator. I'm very very happy. I love to see जब members हमारे like ऐसे upgrade करते हैं and finally godfathers बन जाते हैं. But ये Goodfella से gladiator बने. I'm so happy Shubhang. Nice. Like, he's a very cool person. Like I know him. Like I've met him a lot of times and like he's a great guy. Thanks Shubhang. This means a lot. एंड ये वाली तो वानी की जो लास्ट जो रिकमेंडेशंस थी कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी मेरे को. एंड स्टेट ऑफ माइंड एंड दिस वीडियो, ये कौन सा चैनल पे है?
Yeah, it's on YouTube. Just search for One Day in the Coldest Village on Earth. One Day in the Coldest Village. YAKU. Just search for YAKUTI, Yakuti. I think this will be one of the first recommendations. It's a beautiful documentary. अभी वानी उनके रोनी एंड बाटी के भी एक दो नए वीडियो आए. Did you see Yeah, those? Are they good? I did. They're good. It's Yeah, I miss home, I but miss. but they're lovely. We should follow up with them Yeah. also. I also have a recommendation, guys. I got these. ये paid नहीं है. क्या like paid हुए? ये मैंने lens ये glasses खरीदे lens cart से काफी मेरे को पसंद है. Yeah, Lenskart is Yeah, amazing. this is like. Did you see these like gray in color and like how are they looking? They're nice. अच्छा Turn वाली को around a चश्मे little. पहने. Wait, sorry. Yeah. And Yeah. then, oh wait, I can see well. And then I saw the, and then of course I saw the Lex Friedman podcast with Mr. Beast. It was really, really nice. Nice. And I saw the movie Banshees of Inisherin, which I've already recommended, but it's a beautiful movie. Nice. It's about it was a topic I really wanted somebody to explore, and there couldn't be a better movie. It's about breakups between friends, and it's just it's an embarrassing revival of your emotions and your past memories, but it is amazing. You know, that reminds me कि अभी मैंने इंस्टा पे एक पूरा थ्रेड डाला था लाइक ऐसे सोशल मीडिया टीम को ऐसे बड़े बहुत सारे कि मैंने आई डोंट नो इफ यू सॉ इट लाइक बिगेस्ट ब्रेकअप सीन्स वाला जो पूरा था. Yeah, I saw that one. So मैंने जब शेयर किया तो मैंने एक चीज लिखी थी और मेरे अनिर्बन वाले एपिसोड में भी मैंने बहुत बात की थी कि falling out of love is one of the things that fascinate me the most about human beings when they just fall out of love. So Banshees of Inisherin की जो सबसे खास बात है वो एक लाइन है when a friend tells the other person I don't want to hang out with you anymore because I find you dull. So for me the breakup is there and everything is there, but this line, I just find you dull, it's the most menacing thing you can say to the other person, but it is true कि you are dull. मतलब कितनी सिंपल बात है बट ये कितनी आपके अंदर से आपकी सारी सेल्फ एस्टीम मतलब हिल के रख सकती है बिकॉज समवन डजंट वांट टू हैंग आउट विद मी बिकॉज आई एम डल. और कल तक तो थे तो एक दिन में मैं कैसे डल हो गया. क्रेजी कॉन्सेप्ट. I really liked Yeah. I liked how इनफैक्ट अभी थॉमस फ्लाइट का अभी मेरे को सहगल ने भेजा था लाइक आई नो आया हुआ है बिकॉज लाइक थॉमस फ्लाइट इज अ वेरी गुड वीडियो essay. So Thomas Flight has made a very interesting video. Yet to watch it, but मैंने इनके पहले के देखे हैं, so I know it is going to be a banger. A video on Banshees of Inisherin and why Banshees of Inisherin is the way it is. Yeah. Nice. I'll also watch it. Yeah. I'll also forward it to you. Yeah. Thank you. And then in the month of Feb, what I read Yugant, and along with it, I read Mahabharat. Nice. Yugant, I did not read the entire book cover to cover and in sequence. I picked because I just wanted to pick up characters who I already knew of, and Mahabharat में जो धीरे-धीरे आ रहे थे. And there were a few essays which blew my mind. And it's like we were discussing and the discussion with Ratna ma'am was so amazing. Yeah. And Hindol kind of really helped me go through the book also, last minute B and otherwise also. And it's like he said, he messaged me at the beginning like his favorite character is Bhishma. And the moment he read the essay, he was heartbroken and he hated the book. And I was like, well, why do you hate it? He's like, because it's absolutely correct, all the flaws. And as I read Mahabharat, I realize we've been robbed of so many things because we haven't read the actual text. So what we get to hear is something that's very black and white, but actually Mahabharata is such a nuanced piece of fiction, or sorry, mythology, or maybe whatever. But it's just I'd recommend it to I'd recommend everyone to read it, because sometimes we have a negative bias towards things that have come out of India in a way, because we kind of feel they are a little, I don't know. And I've seen a lot of people ignore Mahabharata because it's a religious text or whatever. But I just think everyone should read it because of how the characters are, and for every character, because every character story is so interesting.
And if you want to read Mahabharata, nothing would be better to give it company than you can't. Nice. So Nice. I'd recommend both these. Then I kind of discovered, I'm so sorry. I discovered tea bags of tea box, which I really, really liked. I've Nice. started drinking, and I discovered them because I wanted something to drink as for my morning streams on Kitabi Cabins. But Nice. uh, ironically, that's the only morning when I don't drink these tea bags anymore because वो ठंडी हो जाती है चाय stream करते करते. So that's that. And then I saw this Colin Salmon video, which you had sent to me, how Andrew Schulz took over YouTube. मेरा लास्ट के 15 मिनट बचे हैं उसके. आई एम एवरी टाइम आई एम ड्राइविंग, आई एम लिसनिंग टू दैट. It's a great video. And Andrew Schultz is like very unapologetic about like how he says things. So काफी intense है वो बंदा. Like he's I funny. really like him. हाँ, he's funny, but like again है मेरे को बदला. But like I think I he's very never used self-aware. to, yeah, I never used to like his, um, I mean, I'm not a big fan of his comedy, but then I like his podcasts at times because those snippets aate hain, he makes sense. And Yeah. in Colin Salmon episode, I got to know him better and why he makes the content, why he makes whatever he Yeah. I'm sorry, I'm struggling No, a lot. you want me to like एक बार के लिए take over यहाँ पे? मैं Yeah, आपको sure, बताऊँ? sure, sure. Like, but आप you can definitely finish the thought. तो उसके बाद I can take lead. Oh, what? Sorry, I मैं didn't कह get. रहा था you can finish the thought, then I can take lead. Oh, sure, sure, sure. So, I mean, I realized through Colin and Samir episode, why he creates the type of content he creates, and B, of course, I'm in love with Colin and Samir now because more I'm discovering their content and how they steer the conversation, I just am loving them even more and more. That was my thought. Great. Do you want me to recommend a few things? मैं भी करना चाह रहा था Sure, कुछ. sure. Please do so. So मेरा जैन अभी अनटच्ड है गाइस. जल्दी से मूड बना लेते हैं. आ जाओ. So ठीक है, let's do जैन now. Few requests पहले स्ट्रीम लाइक कर दो and मजा आ जाएगा भी आपको. ओ पिंक 5 स्टार्स बहुत कम चीजों के बारे में है, बट ठीक है. सो मैंने कुछ चीजों की बात कर ही ली है. ओके, सो आई डोंट थिंक आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट इन जैन. Oh, I have watched this video in Jan. It's about the artist who paints what she hears. So it is again how like dots connect, right? Because Nada Yoga भी मैंने same time पे discover किया था. And synesthesis, ये जो technique है, इसके बारे में भी मैंने अभी discover किया है. So it's also very interesting. So yeah, one of the things is मैंने एक MKBHD का वीडियो देखा था and like जो भी टेक गीक्स है उनको ये चीज पता होगी. So मेरा एक बार थोड़ी मेरी खिल्ली उड़ गई थी कुछ टाइम पहले. एक न्यू ईयर्स पार्टी चल रही थी and someone asked me, hey, can you click a photo of mine? And I'm like, sure. और लो लाइट थी. हमें को लगा मैं लो लाइट फोटोज में मचा देता हूँ. So I clicked the photo of that lady and I was like, मैंने क्या फोड़ा होगा. और रेड लाइट थी and I clicked a photo and I just went to show it to her and I was like, holy shit. When I go, no, wait a second, I can do better. Then I clicked another photo and it was equally bad. Then I clicked another photo and it was equally bad. This also happened on the day Vaani जिस दिन याद है आपका photo shoot चल रहा था. And I was getting very conscious कि iPhone is not showing what I'm clicking. Oh, yes. Then I saw this MKVHD video. What's happening to the iPhone camera? So technically iPhone का camera worse होता जा रहा है. Not because की lenses और megapixels में. वो AI के through आपकी images को enhance कर देता है. तो वो मल्टीपल एक्सपोजर्स के साथ फोटो खींचता है और सबको क्लब करके एक फाइनल फोटो दिखाता है. दिन में अगर ये फोटो खींचोगे तो मचा देगा, राइट? अगर मतलब ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस में इसके बेनिफिट्स बहुत है. बट अगर आपको लो लाइट में ही चाहिए फोटो तो वो आपको इतनी ज्यादा ओवर एक्सपोज करके देगा दैट इट इज नॉट लो लाइट एनी मोर एंड यू हैव नो से ओवर इट. उसका एक हैक है कि आप लाइव में फोटोज खींचो और फिर लाइव बटन को दबा के रखो तो जब मोशन आता है तो एक स्नैपशॉट ले लो. दिस इज हाउ यू लाइक आई हैव बीन डूइंग दिस. कि मैंने जो आपकी उस दिन लाइक फोटोशूट के टाइम जो फोटोज ली थी, जो मैंने खींची थी वो चाहिए. द ओनली वे आई हैड टू डू इट इज वो जब स्क्रब आता है ना लाइव के ऊपर तब मैं स्नैपशॉट लूं, बिकॉज आईफोन इज ओवर एक्सपोजिंग द फोटोज.
So MKBHD has made a such a solid video. तो ये ना पहले दिक्कत गूगल का कौन सा फोन आता है यार, वो जो बहुत अच्छा सा फोन है जिसकी फोटो पिक्सल में भी इशू आया था, बट पिक्सल ने सॉल्व कर लिया. गूगल पिक्सल सॉल्व दिस. आईफोन amazing photos. पिक्सल की क्या फोटोज आती है. सो पिक्सल फर्स्ट लाइक डिड दिस इमेज एनहांसमेंट थिंग एंड इट सॉल्व्ड द लो लाइट फीचर. आईफोन हैजंट सॉल्व्ड इट येट. एंड इट्स एम्बैरेसिंग कि मैं लो लाइट ट्रस्ट ही नहीं कर सकता, बिकॉज जो आप क्लिक कर रहे हो एक बार के लिए दिखेगा, 3 सेकंड रुको ऐसे फाड़ देगा फोटो, उसमें इतनी लाइट भर देता है. True. This is what I realized. So my mother uses Pixel, and day photography I prefer iPhone because you still come across some Pixel will show you all your pimples and just friendly banter. But like raat mein, like Pixel is really really nice. You kind of regret your decision of buying iPhone if you try clicking photos. ये मेरे भाई की. What? Why am I paying so much? Yeah. Pixel का camera, I remember, like it was very very good. So that is there. And interestingly, in Jan I was also watching Queen's Gambit. So I have big issues with Queen's Gambit. Interestingly, I loved the first few episodes of Queen's Gambit, and like last few months I've been overtly obsessed with chess, but I could never finish Queen's Gambit. And I think it's a surprising thing because after मतलब अभी she's going to Russia and all, and I don't care. And it's crazy how I stopped caring about the show by the last episode, because the first episode of Queen's Gambit is ultra solid. Like when you see that kid learning chess, you see like she taking those pills and stuff. And right now I have become so slow with the overall, like I haven't able to, मतलब मेरा मन नहीं हो रहा. मैं देख लूंगा, but it'll be something I'll watch जो मेरा fast food show होता है जब खाना खाते खाते जब देखते हैं. But it started off as something which was something different. So for me, somewhere Queen's Gambit stopped being as great as I thought it would be. Yeah, I'm so sorry. Please complete your thought. नहीं आप बताओ ना. I think that happened to me as well towards the end of Queen's Gambit, but when that happens to me, I kind of just fast forward because I really want to finish the series. ये आपका बड़ा खतरनाक लगता है fast forward वाला मेरे को scene, like. The thing is, like, I really want to be done with the series. Otherwise, I'll keep on obsessing about the fact that I wasn't able to finish it, and ये homework बचा हुआ है अभी, and it really bothers me. So that happened to me with Queen's Gambit. But then Euphoria में तो और भी बुरा था because I was just like, why do I have to watch it? So I played Euphoria. I fast forward, did as much as I could, and then I slept. And Euphoria kind of finished in the morning. Vaani, इसको finish नहीं बोलते, इसको cheating बोलते. This is cheating. I kind of cheated my way through it, but it was just, I don't know. It's just there is something very like at the last so series. मैं सोचता हूँ कि हिंडोल को बुला के एक सोलो क्विज कराते हैं. Everything that Vaani has claimed to have watched over the last 3 months. But then the thing is, that's why I kind of yeah. No, I get it. Like it happens. Slavoj Zizek का Criterion Collection का video है where he says, so ना वो ऐसा लोगों को लगता है he's a cocaine addict because when he's speaking he's like, so I did this. तो वो ना ऐसा nose को ऐसे करता रहता है. He says this very interesting thing in his. So I was watching that movie. It got boring in the middle. So I fast forwarded it a little, and everyone is making fun of him in the chat. कि Slavoj Zizek movies को fast forward करता है. मतलब you are not allowed to do these things. I think you know what. Yeah. I mean, A, I think you're allowed to do that. B, this is how I judge if a movie or a TV show is actually good. If I can sit through anything without fast forwarding it, it's genuinely good. Crazy. So, and anything, you know, like calling VM के episodes, मैंने एक बार fast forward नहीं करे. Nice. Good save, Vaani. But like, yeah. No, but I think that's I figured it out. Yeah. Like the moment I want to fast forward something, I'm like, okay, this is not that good. But you need to like rethink the strategies here because you are misaligned with nature, I would say. So end खत्म करना ही क्यों है? मत देखो तो. But then there's this thing that you have this urge to, ठीक है, I need to finish this. हाँ वो क्यों अर्ज है बेटा? Because I'm still new to watching things. I think I used to do this with books. Alchemist. I stuck onto it for 3 months. 3 months is a long time, Vaibhav. And like books you can't. Then I moved on to, I fast forwarded books, which I did not like because I wanted to finish them. Now I've reached a stage where I'm like, hey, I don't like this. I'll move forward.
But I can't do that to TV shows or movies. So I No, just but like it's great कि आप क्योंकि you have been making far more videos about movies and like shows than me lately, so I can't like call you out here, and like I think it's just कि इसको आप वो rethink कर सकते हो, जैसे मेरे साथ बीच में हो गया था, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था, but then I got the confidence again to get into it, but like क्या हमें यहाँ पे strategies rethink करनी चाहिए. There is a super chat by Ati and he's saying कि दिशाइन डिसकंटिन्यू कर दे. दिशाइन को डिसकंटिन्यू नहीं किया, हमने उसका फॉर्मेट चेंज किया, हम उसको थोड़ा तन्मय रिएक्ट्स वाले फॉर्मेट में कर रहे हैं. दिशा एंड हिंडॉल शूट लॉन्गर वीडियोस ना, और उसको हम एक कैसे एक 10-15 मिनट की वीडियो के जैसे रिलीज करते हैं. Guys, you need to understand a few things. Since Jan, the channel has really shot up. Okay, we were on 1 lakh. अभी आपसे 1 लाख सब्सक्राइबर करवाए थे. Now we are about on 1,80,000. सो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सीरीज ऑफ द मंथ है, वो हमने डिसकंटिन्यू नहीं किया, बट हमें कभी कभी लगता है कि व्हेन वी डू लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट वेयर वी आर जस्ट टॉकिंग एंड वी डोंट हैव टॉपिक्स एज सच, यू गाइस आप बोलते हो कि वो हम कम बना रहे हैं, बट लाइक it just the views and everything are lesser on that, and we are very scared that ways, क्योंकि the well again like our like finances are also dependent on the channel. There are multiple angles to it, because a lot of people message me and ask me series of the month क्यों बंद कर दिया, and I always tell them क्योंकि वो flop हो गया. मैंने जब सीरीज ऑफ द मंथ का जब स्ट्रीम किया था तो 25 लोग आके देख रहे थे वो स्ट्रीम, एंड देन आई एम लाइक कि आई वी कैन नॉट टेक दैट रिस्क राइट नाउ ऑन द चैनल कि लाइक वी कैन लाइक कि तो उसका फॉर्मेट चेंज करते हैं. वी ऑलवेज वांट टू डू दीस थिंग्स, सो वी कीप एक्सपेरिमेंट. वानी और मेरे स्ट्रीम अब कम क्यों होते हैं? Why are we every time we are showing up we are just talking about the best of? Because we are also like evolving. तुम्हें पता है मैं पहले evolving को क्या बोलता था? मैंने ये गलती, मैं evoluting बोलता था. I have seen like to make a point or like नहीं मैंने कभी गलती कभी कभी होता तो इसका तो यही होता होगा, तो मैं भूल गया था evolving भी एक वर्ड होता है. So the point being right now कि we are evolving, and हम भी वो ट्राई करें कि जब भी हम आपके पास आए हम टू मच इन्फॉर्मेशन लेके आए, और आप लोगों की फीडबैक लिए थे हमने. फीडबैक फॉर्म बाय द वे डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड होगा, अगर मॉडरेटर्स टीम को बता सकते हो तो बता दो. मेरे पास अभी 350 लोगों के 350 या 400 लोगों के फीडबैक आ चुके हैं, एंड वी टेक द फीडबैक्स वेरी सीरियसली. इवेंचुअली हम थोड़ा डिक्टेटरशिप मॉडल पे ही चलते हैं कुछ कंट्रीज के जैसे, बट या द आइडिया इज कि बहुत लोगों ने बोला था कि उनको इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली चाहिए, एंड दैट इज समथिंग दैट वी ट्राई टू डू. Yeah. And I think it's interesting for us as well. Yeah, it like हमें टोस्ट पे रखती है चीज. आप अगर आप वानी, मेरे, दिशा और हिंडॉल के सारे स्ट्रीम्स देखो, जो हम आप ओवर प्रिपेयर करके आते हैं, वी ट्राई टू नॉट गिव यू अ सिंगल वेस्टेड सेकेंड. अगर कहीं हम ड्रिफ्ट ऑफ कर जाते हैं जल्दी से वापस आ जाते हैं. इसलिए जैसे पहले अगर हमारे स्ट्रीम 100 लोग देख रहे होते तो अभी भी देखो 165 देख रहे हैं. हम चारों जब करते तो 200 देख रहे होते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक इंटरेस्टिंग दैट वेज. वानी, कैन आई जस्ट गेट वाटर इन अ सेकंड? लाइक आप एक बार Sure, I'll take over until then. Yeah. Hi guys. Cool. So I'll continue with a few things that I was left with. Also, when Vaibhav comes back, perhaps we can go back to saying that we were talking about him. I discovered, awkward. I discovered this. So a lot of my discoveries were in the month of Feb. Also, not only the things that I've already discovered. Why there was no morning stream today, and when? Okay, there was no morning stream today because I just moved houses and I was a little caught up in shifting today. But we will have it sometime during the weekend. Please don't worry about it. Vaani on. Yes. Hi, Vaibhav. Welcome back. Which version of Mahabharata was I gifted? Amar Chitra Katha. Makes it easy to read them because everything is comicish. It's it's graphic novel of sorts. So yeah. Okay. What's up? Yeah. Do you want me to take lead? Yeah, sure. I think we can do that. Is there anything else here that you'd like to recommend? Yeah. Last few things, but मेरे को लगता है फेब के साथ मैंने जैन भी बहुत सारा कवर कर लिया. देयर इज एडम सैंडलर्स 100% फ्रेश. मेरे को ये चीज अनिर्बन ने उनके एपिसोड में रिकमेंड की थी, यू शुड वॉच इट. इट्स वेरी यूनिक काइंड ऑफ कॉमेडी, एंड उन्होंने कहा था कि
बहुत बहुत सारे दिग्गजों ने बोला कि इट्स द बेस्ट स्टैंड अप स्पेशल आउट देयर। एंड मैं एक बार कहीं ट्रैवल कर रहा था, रोड ट्रिप थी कुछ, और मैंने पूरे रास्ते 100% फ्रेश सुना था। लाइक आई हैव नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, because he's not trying to be funny, he's just saying things in a very arrhythmic way, and like it's just coming out as funny. So Adam Sandler's 100%, Adam Sandler एक बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा है यार, अगर आप उसकी लाइफ ट्रैजेक्टरी, उसकी फिल्मोग्राफी और सब कुछ देखोगे। सो 100% फ्रेश, आई थिंक आई फिनिश 70% ऑफ इट, बट दो 70% वर गुड। सो आपको वो देखना चाहिए, दैट मेरा लिखा हुआ है 100%। लाइक एक मूवी देखी थी द मेन्यू, वो मेरे को इतनी खास नहीं लगी, बट इवन दो इट इज मेड बाय fuck, I forgot the name of the director, but the guy who has made Succession के who the सबसे greatest episodes जिन्होंने डायरेक्ट किया। या सो बट लाइक आई डिडंट लाइक द मेन्यू, क्योंकि मेरे को कुछ कुछ ही, और मैंने एन एक्शन हीरो देखी थी, वो मेरे को ठीक ठीक लगी। आई थिंक पीपल लाइक इट लाइक अ लॉट। मेरे को एक्शन हीरो सही लगी, लाइक लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे को ठीक लगी थी। I didn't. Avi, या I didn't. नहीं नहीं, बट लाइक I did पीपल not. आर, Yeah. या मार्क मिलॉर्ड, लाइक मार्क मिलॉर्ड इज द नेम ऑफ द फिल्म मेकर जिन्होंने द मेन्यू बनाई है। डीजे वर्मा सिंह, थैंक यू सो मच। एंड yeah, so these are pretty much it. और David Elric का ना हर साल एक वीडियो आता है, he's a film critic where he makes the best of 25 films of every year. मेरे को याद है हम कॉलेज में भी जब थे सारे इकट्ठे हो जाते थे कि डेविड एलरिक का नया वीडियो है, बिकॉज ही मेक्स वन वीडियो अ ईयर, Mm. एंड इंडी वायर के लिए लिखते हैं वो। सो एंड इट्स अ वेरी गुड, लाइक वैसे मोन्टाज कटिंग वगैरह करते हैं। सो ये 2012 13 14 टाइप से कर रहे हैं, तो 2022 का देखना। उस पे टॉप 25 फिल्म्स में देयर इज ऑल दैट ब्रीड्स, देयर इज आरआरआर, वन पे आफ्टर सन है। एंड आई थिंक वानी यू विल हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन आफ्टर सन। आई थिंक इट्स अ मूवी दैट लाइक इज मेंट फॉर What platform is it available on? मूवी, Ah, got एंड it. यू हैव द Access. एक्सेस। या Yeah. लास्ट ऑफ अस की हम बात कर चुके हैं हरी, आई थिंक यू हैव जॉइन्ड इन लेट, लास्ट ऑफ अस की काफी What बात are कर you चुके। watch? Oh, Succession is also coming out. सक्सेशन इज, मैंने प्लानर पे भी लगाया हुआ है, सक्सेशन इज कमिंग ऑन 26th of March दिस मंथ। या सो Mm. लास्ट ऑफ अस के दो या वो लास्ट ऑफ अस के शायद दो एपिसोड बचे हैं या तीन मैक्स, एंड देन इट्स सक्सेशन टाइम गाइस। Yes. Yeah, and that's pretty much it from my end. और भी चीजें हैं, but like I started reading this book called A New Innings. It is written by the owner of Rajasthan Royals, Mhm. and ki how IPL changed the whole landscape of like cricket, because cricket was dying at the time, and then Yeah. IPL came in, and like how Lalit Modi and everyone There's joined in. also, I think, a really nice documentary on it. I saw it a couple of years ago, and that kind of I'm set my sure. perspective on IPL. Oh But I can't yes. remember the name of the अगर doc. किसी को chat में पता है तो please बताना. And it's an amazing documentary. I'd recommend it to everybody, but I've just forgotten it. Yeah. And I learned this term called mimetic theory. ये मैंने एक term लिखा हुआ है. Mimetic theory is something I learned from White Lotus. So mimetic theories कि जब आप बहुत successful हो जाते हो life में, या जब आप successful बन रहे होते हो, you mime the actions and the traits of more successful people. So there is this dialogue in it where someone calls him out. तेरा पता है तेरा mimetic लाइक वाला एक्शंस का दिक्कत है कि अगर कोई तेरे से ज्यादा सक्सेसफुल आदमी ये करेगा तो तू वो सेम चीज करेगा। एंड देन आई वेंट इनटू दिस थ्योरी एंड लाइक ट्राई टू रीड अबाउट इट। इट्स अ रियल थिंग, people try to like mime the things that like more successful people do so that they can also look successful. Very fascinating concept. So it was in White Lotus season 2. I've been trying to start White Lotus season 2, but something or the other always distracts me. But in the Yeah, month of March, I will definitely pick up White Lotus. yeah, but that's pretty much it guys. We'll also have to wrap in a bit, like अभी हम वानी पे आएंगे वापस, and like these were some of like our recommendations. जल्दी से like कर दो stream, and like it is always great to come. और sorry हमने इस बार जैन और मैफेब को combine किया, like I was saying कि हम like कर नहीं पाए, और दो के बाद हम करते हैं मंथ के तो हमें गिल्ट होती है कि अब लोग क्यों देखेंगे। So हमने इस बार सोचा कि जैन और फेब को combine कर लेते हैं। And yeah, Vani, like, do you want to add something? I had a couple of. Wait, I'll have to figure it out if it's in my laptop. If it's here, I can share it with everybody. I discovered a
another quote. It was actually a part of an article. And I just wanted to share it with you also, but I just came across it. So I thought this now no better moment than now. It's by Jack Kerouac. He was a really, I Oh think, yes, Jack and Kerouac. he wrote this. There was this part of the article that he wrote. It's called "Are Writers Made or Born?" And then he has this whole Oh, speech on if they are made or born. And so this is a quote: "Writers are made for anybody who is not illiterate can write, but geniuses of the writing art like Melville, Whitman, or Thoreau are born." Let's examine the word genius. And then hmm, there's this, I think, a subtake on that, and it says that it doesn't mean screwiness or eccentricity or excessive talent. Um, it is derived from the word jijner, genius. The word is derived from the word jijner. I think I'm pronouncing it incorrectly, but it means to beget. And a genius is simply a person who originates something never known before. Like nobody but Melville could have written Moby Dick, not even Whitman or Shakespeare. Nobody but Whitman could have conceived, originated, and written Leaves of Grass. Whitman was born to write a Leaves of Grass, and Melville was born to write a Moby Dick. It ain't what you do, Cy Oliver and James Young said. It's the way Acha do it. Like it's not what you do, but it's the way you do it. 5,000 writing class students who study required reading can put their hand to the legend of Faustus, but only one Marlowe was born to do it the way he did. I always get a laugh to hear Broadway wise guys talk about talent and genius. Some perfect virtuoso also who can interpret Brahmas, I don't know how to pronounce these, on the violin is called a genius, but the genius, the originating force, really belongs to Brahms. I think it's Brahms. The violin virtuoso is simply a talented interpreter, in other words, a talent. Or you'll hear people say that so and so is a major writer because of his large talent. There can be no major writer without original genius. Artists of genius like Jackson Pollock have painted things that have never been seen before. Anybody who's seen his immense um, color has no right to criticize his crazy method of splashing and throwing and dancing around. Take the case of James Joyce. People said he wasted his talent on the stream of consciousness style, when in fact, he was simply born to originate it. How would you like to spend your old age reading books about contemporary life written in the pre-Joycean style of, say, Ruskin or William, etc., etc.? And then this is the last part. Some geniuses come with heavy feet and march solemnly forward like Dresser. Yet no one ever wrote about that America of his as well as he. Geniuses can be scintillating and geniuses can be somber, but it's that inescapable, sorrowful depth that shines through, which is originality. And I really, really liked this article about, are writers really born? got it. Nice. मेरे को भी भेजना ही है. I'm like, I would love to read this. I'll Yeah. send it. Where is this article from? I don't know. I think I came across this on Facebook of all places, Yeah, and Facebook is my favorite things to go to. got it. Guys, do like the stream. Like we'll be ending the stream soon, and a lot of people are commenting. अभी just Succession का trailer आया है. So I think that is the first thing we'll watch. लोग कह रहे हैं कि watch along करने के लिए, but like इसके बाद हम Yeah. देखेंगे. अभी नहीं कर पाएंगे. And yeah, so a lot of things. Article का link लोग वानी comments में मांग रहे हैं, तो please दे दो article I का don't link. have the link, but I have the screenshot actually. Hmm. I never, because I kind of am Yeah. picking an archive of screenshots. Yeah. I'm sorry. So that's there, and yeah, guys, this was pretty much it from my, like our end. मेरे को भी कुछ quotes बताने, जल्दी से बता देता हूँ जो मैंने लिखे थे from the month of Jan. So so Dango is a person I follow like a lot on Twitter. वो health related बहुत चीजें लिखते हैं and like working out related बहुत चीजें लिखते हैं. So he wrote, feeling stressed, let's go get a workout. Feeling bored, let's go for a walk outside. Feeling anxious, let's journal to find out the root cause. And then he writes, let's train ourselves to deal with our emotions in a healthy way. So I really like it.
Then there is this something I've written, I think it was a tweet: work life balance in your 20s is an easy way to guarantee a mediocre career. And this is also something that I really like. And uh, there is a Theodore Roosevelt quote: we must all either wear out or rust out, every one of us. My choice is to wear out. So ये मेरे को बड़ा पसंद आया था. And yeah, these were some of the like things that we saw. And thank you so much for like being with us till the end, guys. अभी हम Succession का like वो भी देखेंगे. और पक्का अब months on month करना है वानी, ये अपन को मिस नहीं करना है. Yeah. है ना? Like let's not miss these, and like we'll be very disciplined with this. जल्दी से stream like कर दो, comment में बताना. Comment में बताओ your favorite discovery of like Feb Until and now. until now. Yeah, and also tell us in comments Succession का trailer कैसा था. But this was amazing. Let's end the stream now, guys. Yes. चलो, like Bye bye bye, guys. See you. Bye. Wrap कर दो.